Hello, friends. Today I'm going to uh, giving the demo of library management system. So, in library management system, we have category, author, publisher, book, member, and issue book and return book. These are the entities. So, related to these entities, we have their we create their tables and we create their forms and how we manage the category, author, publisher. Today just we are giving the demo, how it works, and in further our videos we one by one we create this project completely, category, author, publisher, and we could create the project completely. Let first how it works. So let it run. Okay, I just want to focusing it. Okay, now here we have a category. Let's go to category. So here category we have, and we enter the category name, and here we use combo box because it's a good practice to you show the some fixed name, like if you are using gender, status, and like something like you give them the you use combo box and add that items into the combo list. ओके तो मैंने इसमें एक्टिव और नॉन एक्टिव दोनों कैटेगरीज कर दिए कि विच इज़ एक्टिव एंड विच इज़ नॉन एक्टिव. सो हेयर वी हैव अ ग्रिड, एंड इन ग्रिड में हमने डेटाबेस से ये वाले कॉलम लिए, एंड देन वी हैव टू एडिट एंड डिलीट. वी आर यू कैन आप इसको जो बटन्स हैं यू कैन यूज़ ओवर हेयर, एंड आई यू कैन यूज़ विद द ग्रिड बॉक्स ऑल्सो. So first, if I and this id is auto generated, we discuss this about it later. So first what we have to do, I'm just entering. ओके कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, आप इसमें डेटाबेस कर लें कुछ भी. स्टेटस यूज एक्टिव एंड दिस सेव. ओके ना कैंसिल इट. तो देखिए हमारे पास एक और आ गया है. ठीक है, एंड कैटेगरी आप अगर उसको सिलेक्ट नहीं करते हो तो वो आपके पास आ जाती है दिस. एंड और 0 और 1 का मतलब है इफ़ यू आर सेलेक्टिंग एंड देन एक्टिव है तो 1, अगर नॉन एक्टिव है तो 0. सो अगर अब आपने अगर फ़र्ज़ करें कि आपने एडिट करना है तो मैं एडिट के बटन पे जाऊंगी और यहाँ पे डेटाबेस है तो डेटाबेस 1 कर दूँ. मैं अगर फ़र्ज़ मैं यहाँ पे जाके 1 कर दूँ एंड यहाँ से मैं नॉन एक्टिव कर लूँ तो इसको सेव करूँ तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना इसको रिफ़्रेश करें. सो तो ये देखें आपका जो है रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया है. 6 नंबर पे हमने डेटाबेस 1 एंड दिस इज़ नॉन एक्टिव इज़ अपडेटेड. ओके, so for next other second category we are just ऑथर कैटेगरी. और अब इसमें है हमारे पास इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑथर. तो उसमें आपने जो है क्या है नेम कुछ भी, जैसे हसन, एड्रेस some random phone number, just give some random and add it. Okay, I will just use the refresh again. I come to Hassan and the data is added. If I have to edit it, so मैं just edit के बटन पे क्लिक करूँगी, मेरा डाटा सारा टेक्स्ट बॉक्सेस में चला जाएगा एंड हेयर आई कैन एडिट इट. फर्स्ट करें कि मुझे हसन अली करना था तो हसन अली कर दिया. एंड नाउ अगेन आई अपडेट द माई रिकॉर्ड इज़ अपडेटेड and I go back and come back to, so here the record is updated. So same like you can delete it. I just
click it and the record is deleted, and I'm going to this and come back to see my record which is entered is deleted. Okay, next we have publisher same information related to the publisher है, आप एंटर करें पब्लिशर की, जैसे पब्लिशर का समी नेम है और उसका एड्रेस कुछ ऐसे है एंड उसका फ़ोन नंबर you have something and add it. Okay, record is added. Okay, I'm going back and again come back to my summy have this same, we can edit, we can delete. Okay, next we have book. दिस इज़ द बुक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपने बुक की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। जैसे मैंने अब बुक की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है तो मैंने लिखना है डीबी। जो मेरी बुक है वो मेरी क्या होगी, डीबी। सो आई जस्ट यहाँ पे HTML, यहाँ पे मेरे पास ऑथर नेम ये पड़े हैं, ठीक है। मेरे पास रिदा है, पब्लिशर मेरे पास 2 और 4 है, और कंटेंट कुछ भी है, और पेजेस मेरे पास इसके इतने हैं, एंड एडिशन मेरा ये फर्स्ट है। तो मैं इसको सेव करूँगी, जो कि ऐड और सेव हो चुका है। मैं बैक जाऊँगी एंड देन कम बैक टू माई बुक, और मेरा सेकंड जो है वो डीबी के नाम से मेरी जो है वो ऐड हो चुकी है और एडिशन 1 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव मेंबर। सो हेयर आई जस्ट हैव वन एंड नेम, अगर मैं असलम एंड एड्रेस कोई भी रैंडम, और फ़ोन नंबर दिस इज़ द फ़ोन नंबर, और सेव। ओके, रिकॉर्ड मेरा सेव हो चुका है। एंड अगर मैं इसी को कैंसिल करूँ तो ये तो हाइड नहीं, कैंसिल बटन इज़ नॉट वर्किंग, तो मैं चेक करूँगी दोबारा। यस, माई डाटा इज़ अपडेटेड एंड माई ग्रिड व्यू इज़ अपडेटेड। ओके, तो ये इसी सेम वैसे ही होगा कि हम इसको चेक करेंगे तो ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा और हम इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देर इज़ नो नीड टू एडिट इट, सो वी जस्ट go back. There is some flaws and we fix it. Okay, issue book. So issue book के लिए हमें हमारे पास member ID 2, और मैं एंटर करूँगी तो member ID is not found. Okay, so member ID 1, okay, it's found. Yes, member ID 1 is found and book is DB founded and date is this, and if I give the 21st था तो मैं 19 कर दूँ, तो करूँ तो मेरे पास सेव हो जाना चाहिए था। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव रिटर्न बुक। तो हमारे पास रिटर्न बुक है, तो इसका मेंबर हम आईडी जो है 2 करें, तो इसका उसको बिफोर टाइम उसने दे दिया है, तो हमारे पास इसका कोई इलैप्स डेज नहीं आ रहे, डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसका कोई फ़ाइन नहीं बनेगा। अगर मतलब अगर आपने 4 को रिटर्न करनी थी एंड यू टुक टाइम 6-7, तो यू टुक 2 days एक्स्ट्रा, तो इट पे फॉर दैट। सो दिस इज़, I hope you understand, and I hope you continue this project. You like my effort and you continue with me this project in our next videos.